In previous video, we have derived integrated rate equation for a zero order reaction. Let us derive today integrated rate equation for a first order reaction. Let us consider reactant R is converted into product. Let us consider it is a it is a first order reaction. Let us consider. Therefore, differential rate equation for this reaction is minus dr by dt equal to k into concentration of reactant R to the power 1. Exponent of the reactant is 1 because it is a first order reaction. Now rearranging this relation, we have minus dr by concentration of R dt का जगह में लेके आ गया और dt को ले जाना है concentration of R का जगह में. Now we have to derive this relation. Integration of dr by R. K is a constant. कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकता है. k into integration of dt. So according to the integration calculus, integration of 1 by x dx equal to log x according to integration calculus. So this is integration of 1 by r dr equal to k into integration of dt. So this is integration of 1 by r dr. This is similar to integration of 1 by x dx. So we can write log x. लेकिन हम लोग log x नहीं लिख के हम लोग लिखना पड़ेगा ln x, मतलब ln r. ln it is known as natural log. So ln equal to 2.303 log होता है. So ln equal to how many log? 2.303 log. Or ln it is known as natural log. So minus ln concentration of reactant R equal to, so this is integration of dt. This is similar to integration of dx. Integration of dx equal to x. So integration of dt equal to t plus I is an integration constant. So suppose this is equation number 1. Now we have to determine the value of integration constant I. So to determine the value of integration constant I, let us consider when time is equal to 0, that means at the beginning of the reaction, concentration of the reactant is equal to initial concentration of the reactant R0. Now applying this condition in equation number 1, then we have ln concentration of R, then we can write in place of concentration of R, we can write concentration of R0. R0 is initial concentration of the reactant, is equal to K. Time is equal to how many? 0 plus I. Then value of I equal to how many? Minus ln R0. Now putting the value of I in equation 1 में I का वैल्यू पुट करने से, so minus ln R equal to concentration of R K into T, or in place of I we can put minus ln R0. Now then we can write KT equal to finally ln R0 minus ln R. So KT equal to ln R0 minus ln R. This is similar to log A minus log B. So log A minus log B equal to log A by B. So this is ln R0 divided by R. So
k equal to then k equal to 1 by t ln r naught divided by r. अगेन k इक्वल टू हम लोग ln को log में कन्वर्ट कर देने से देन वी हैव टू पुट 2.303 डिवाइडेड बाय t log r naught divided by r. So these are intricate rate equation for a first order reaction. So this is the intricate rate equation for a first order reaction in the logarithmic form. हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए ये लोगरिथमिक फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा. सो ये इक्वेशन से हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करने से एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगेंस्ट द टाइम हम लोग ग्राफ प्लॉट करने से वी हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ. हम लोगों को इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, फ्रॉम द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ वी हैव एल एन आर नॉट. एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इक्वल टू हाउ मेनी माइनस के. सो ये ग्राफ का स्लोप का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने से दैट इज द स्लोप. सो ये ग्राफ का स्लोप का वैल्यू से हम लोग रेट कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएगा. एंड ये ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्राफ को एक्सटेंड कर देने से y एक्सिस में जिस पॉइंट में इंटरसेप्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. यहाँ से यहाँ तक दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. तो इंटरसेप्ट इक्वल टू हाउ मेनी एल एन आर नॉट. सो इंटरसेप्ट का वैल्यू से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट फाइंड आउट कर सकता है. आर नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. आर नॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0. सो ग्राफ का इंटरसेप्ट से हम लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट फाइंड आउट कर सकता है. ग्राफ का स्लोप से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकता है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है. नाउ relation of half life for a first order reaction के लिए half life का relation derive करना है. So what is half life? We have discussed about it in the previous video. Half life, it is a time at which concentration of the reactant is reduced to half of the initial concentration of the reactant. At half life 50% reactant are converted into product. तो हाफ लाइफ ऐसा एक टाइम है जिस टाइम में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन घट के हाफ हो जाता है. जैसे कि इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज 10 ग्राम. सो जितना टाइम का बाद 3 ग्राम से रिएक्टेंट का अमाउंट 5 ग्राम हो जाएगा, दैट इज द हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. सो हाफ लाइफ T half denoted by T half, half-life T half, it is a time, half-life T half, it is a time at which concentration of the reactant reduces to half of the initial concentration of the reactant. So ये कंडीशन को हम लोग अप्लाई करने से इन द इंट्रीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इक्वेशन में हम लोग ये कंडीशन को अप्लाई कर देने से देन k equal to 2.303. In place of t we have to put half life period T half log initial concentration of the reactant R naught. Concentration of the reactant is equal to half of R naught. Then R naught cancelled. Then 2.303 divided by T half. So log 2, क्योंकि R naught cancel हो गया, 2 ऊपर से लग गया. Then value of log 2 equal to 0.3010. value of log 2 equal to log 2 value equal to how many, 0.3010. or remember it, log 1 equal to 0 and log 10 equal to how many, 1. remember it.
सो ऊपर का दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से देन k इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा t half. So this is the relation between, this is the relation of half life for a first order reaction, or this relation we can also write t half equal to 0.69 divided by k. So according to the relation for a first order reaction, half life is independent on the initial concentration of the reactant. So for a first order reaction, half life is inversely related to the rate constant k. So this is the relation of half life for which order of reaction? First order reaction. So फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेट कांस्टेंट के फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों को हाफ लाइफ का रिलेशन क्या मिला था? टी हाफ इक्वल टू आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 into k. So this is the relation of half life for zero order reaction. So according to the relation for a zero order reaction, half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant and inversely related to the rate constant k. But for a first order reaction, half life t half is independent on the initial concentration of the reactant r naught, क्योंकि ये relation में r naught term नहीं है. But half life for a first order reaction also inversely related to the rate constant k. Let us derive now integrated rate equation for a gaseous first order reaction. In a gaseous reaction, all the reactant and products are in the gaseous state. Let us consider it is a gaseous reaction. Reactant A, it is in gaseous state, and product B and C are also in the gaseous state. So for a gaseous reaction, amount of reactant and products are measured in terms of partial pressure. गैस का क्वांटिटी मेजर किया जाता है in terms of pressure. Let before starting the reaction, that means at the beginning of the reaction, pi it is the initial pressure of reactant A. Before starting the reaction, we have only reactant A. So we have pressure only for reactant A before starting the reaction. Before starting the reaction, time is how many? Let us consider 0. So pi is the initial concentration of the reactant. pi is the is the initial pressure of the reactant when time is equal to how many? 0. pi is the initial pressure of the reactant. pi is the pressure of the reactant when time is equal to 0. When time increases, pressure due to the reactant A decreases and pressures due to the product B and C increases. जब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा 0 से, A के लिए प्रेशर घटेगा, B and C के लिए प्रेशर बढ़ेगा. Suppose after time t, PT is the total pressure. PT is the total pressure. PT is the total pressure after time t. After time t, PT is the total pressure. So how can you find out total pressure? Total pressure PT equal to partial pressure for the gas A plus partial pressure for the gas B plus partial pressure for the gas C. So after time t, pressure for the gas A PA, pressure for the gas B PB, pressure for the gas C how many? PC. So after time t, how many total pressure? P total pressure is equal to PA plus PB plus PC. So what is PA? It is known as partial pressure for the gas A after time t. PB, partial pressure for the gas B after time t. PC, partial pressure for the gas C after time t. So where PA, PB and PC are partial pressures for
gases A, B and C, respectively. So PA, PB and PC are the pressure of the gas A, B and C after T time. So let us consider now, after time T, pressure of the gas A decreases by X. हम लोग कंसिडर किया आफ्टर टाइम T A के लिए प्रेशर डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, X डिक्रीज हुआ. जब A के लिए प्रेशर X डिक्रीज होगा, देन B एंड C के लिए B का प्रेशर X बढ़ेगा, C का प्रेशर कितना बढ़ेगा, X बढ़ेगा. सो this is the reaction we are considering when time is equal to 0. Pressure for the reactant A, initial pressure for the reactant A is how many, Pi, and pressure for the B and C is equal to how many, 0. So after time T A के लिए प्रेशर घटेगा. हम लोग कंसिडर किया A के लिए कितना घटेगा प्रेशर, X घटेगा. देन A के लिए प्रेशर रहेगा कितना, Pi minus X. Pi is the initial pressure of the gas A. X is the pressure decreases for A. So finally A के लिए कितना प्रेशर रहा, Pi minus X. और B के लिए प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि A के लिए प्रेशर घट रहा है, रिएक्टेंट के लिए जब प्रेशर घटेगा प्रोडक्ट के लिए प्रेशर बढ़ेगा. सो A के लिए प्रेशर कितना घट रहा है, X घट रहा है. देन B के लिए प्रेशर कितना बढ़ेगा, X बढ़ेगा. C के लिए कितना बढ़ेगा, X. So now after time T, partial pressure for A equal to how many, partial pressure for A is Pi minus X, partial pressure for B equal to how many, X, partial pressure for C equal to how many, X. So these are the PA, PB and PC after time T. Then after time T, how many total pressure, P total equal to PA plus PB plus PC. Then PA equal to how many, Pi minus X, and PB equal to how many, X, PC equal to how many, X. So minus X plus X cancel, then Pi plus X. Then what is the value of X? Then X equal to PT minus Pi. So X equal to how many, PT minus Pi. So X यहाँ से मिला. Then then PA equal to what, after time T, Pi minus X. So हम लोगों को X वैल्यू कितना मिला, X वैल्यू मिला PT minus Pi, ब्रैकेट कर देने से. देन Pi ट्वाइस ऑफ Pi हो जाएगा ये, माइनस PT. दिस इज द वैल्यू ऑफ PA is the partial pressure for the gas A after time T equal to how many, twice of Pi minus PT. Now integrated rate equation for the gaseous first order reaction, integrated rate equation for the gaseous first order reaction, K equal to 2.303 divided by time T log initial pressure of the reactant A, Pi, divided by pressure of the reactant A after time T. So at the beginning of the reaction, when time is equal to 0, how many pressure for the reactant A, Pi, and Pa is the pressure of the reactant after time T. Then K equal to 2.303 divided by T log Pi. So Pa equal to how many? We determine the value of Pa equal to twice of Pi minus PT. So this is the relation, this is the integrated rate equation for a gaseous first order reaction. So gaseous फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K, रेट कांस्टेंट K का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन नहीं तो इनको
हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज़ करके हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।